Okay, so welcome to Computer Science A Levels Part 2. And first, we are going to start with the assessment. So in A2, we have only 2 exams, right? 2 papers, paper 3 and paper 4. So paper 3 is of advanced theory and paper 4 is of practical. Paper 3, 1 hour, 30 minutes. Paper 4, 2 hours 30 minutes. is of practical. So paper 4 is of 2 hours and 30 minutes. So let's discuss further about paper 3 and 4 here. So paper 3, advanced theory, 1 hour, 30 minutes paper. It means that this is a full length paper, right? Okay. Secondly, this exams consist of 75 marks. It's a full length paper, so the marks are also like 75. Paper 3 have the chapters from 13 chapter to 20 chapter. It means we have to prepare 7 chapters in order to attempt the paper. It is a written paper and you have to answer all questions. Bad luck, dude, because again and again from O levels till A levels, तुम लोगों के साथ ये जुल्म होता है कि तुम लोगों को सारे क्वेश्चंस करने होते हैं without any calculator. So sorry for that. Next is paper number 4. Paper number 4 is, tell me, practical exams. So this paper is of 2 hour 30 minutes. So ये काफी lengthy होता है. 2 hour 30 minutes का पेपर होता है, लेकिन स्टूडेंट जो ये 1 hour 30 minutes के आसपास कर लेता है. ठीक है. So this paper is of how many marks? 75 marks. In paper 4, you have to prepare for chapter number 19 to 20, but ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 2 chapters करने. अभी तुमने recently AS के exams दोबारा दिए, definitely तुमने AS का पढ़ा हुआ भी होगा दोबारा. So you know there are the programming things like bubble sort, linear search, right, pseudocode, algorithms, so many things are there. तो तुम्हें वो सब कुछ दोबारा से पढ़ना होता है. So candidates will submit complete program code and evidence of testing. तो तुम्हें क्या करना होगा? Paper 4 के लिए you have to select a programming language that's called Python. ठीक है, हम Python पिक करेंगे, Python पे कोडिंग करेंगे और उस कोड को टेस्ट करेंगे, यानी टेस्ट का मतलब है रन करेंगे. While we run, we need to take a screenshot. हम स्क्रीनशॉट लेके उसे डॉक्यूमेंट पे कॉपी पेस्ट कर देंगे. सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है एग्जाम्स के अंदर, यानी आप जिस कंप्यूटर पे बैठेंगे वहां एक असिस्टेंट भी होता है स्टूडेंट्स के लिए जो कि आपको गाइड करता रहता है. ठीक है, जी सर. तुम्हारी तो बैटरी लो हो गई अभी से, एनर्जी कहाँ है भाई तुम्हारी? नहीं सही है जी सर. हाँ, सॉलिड होनी चाहिए. ठीक है जी. सो दिस इज अ असेसमेंट रिव्यू ऑफ A2 कंप्यूटर साइंस. टेक आउट योर नोटबुक. While I'm teaching you, you don't need to write anything. I will give you the time for writing after I finish the reading task. So I will give you the time for writing. So please do not write anything while I'm teaching you. Okay? Acha, now I'm giving you the time for writing down the things. You need to write down these 2 things and you need to write down the paper assessment. The important things which you see on the screen. You have only 5 minutes for it. Now we are going to start our chapter number 13, and this is the first chapter of our A2 computer science syllabus. That's called data representation. What is data? What do you mean by data? Sir, data is information. Yes. Data is a raw information, right? Raw means an incomplete information. And what are data types? Like if we have a number, if you have an alphabet, if you have a specific data like male or female, if you have
True or false? So what do you think? What do you mean by data type? Basically, data type means a data which is specifically define your input, like numbers. Numbers in programming are represented by a data type of integers. Alphabets are represented with the help of string characters, string alphabets. Male or female, if you are specifying any character, so this is called char or character. So M for male, or F for female, right? Did you learn this thing in AS? Yes, sir. So what is true and false? What is that type called? Boolean. Very good answer. Boolean. And what about the values which are in points or decimal? Real. Real data. Or float. In Python we called it float. Okay? Yes, sir. These things are called your data types. Now coming to our topic about non-composite data types. So what are non-composite data types? Let's make it a bit bigger. I have sent you these notes. So you can just open your notes, right? On your Yes, sir. I've seen that. Oh, perfectly fine, man. A non-composite data type can be defined without referencing another data. It can be a primitive type available in programming languages or a user-defined data type. Non-composite user-defined data types are usually used for special purpose. So in a very simple terminology, non-composite data types are the data types which we use without any reference with another data type. अब ये कैसे होता है ये मैं तुम्हें भी समझाता हूँ. अच्छा, non-composite user data type are usually used for special purpose, like this type of data used for any specific purpose for any specific reason. यानी हम लोग ये normally use नहीं करते हैं. हम लोग किसी specific way में जब हमें कोई reference के बगैर data represent करना होता है तब हम use करते हैं. जैसे we are going to make any database. उस database में स्टूडेंट का नेम है और उसका फादर नेम है. अब नेम किससे रेफरेंस हो रहा है? फादर नेम से. तो ये रेफरेंस हो गया. इस तरह के डाटा टाइप में आपके पास नॉन कंपोजिट यूज नहीं होगा, विदाउट एनी रेफरेंस. ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सर हो. अच्छा, अभी मजीद क्लियर होगी. मैं इसकी एग्जांपल तुम्हें देने जा रहा हूँ. अच्छा, इसी की एक टाइप है enumerated डाटा टाइप. सो enumerated डाटा टाइप is a data type with no references to the other data types when it is defined. In pseudocode, the type definition for an enumerated data type has this structure. अब मैं जा रहा हूं इसकी एग्जांपल पर, तो देखिएगा ये कैसे काम करती है. फर्स्ट, सिंटैक्स कैसे राइट करना है हमें. हमने पहले लिखना है टाइप एंड वी नीड टू राइट एन आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर क्या चीज होती है? आइडेंटिफायर कहते हैं वेरिएबल को. किसे कहते हैं? वेरिएबल. तुमने एस लेवल में वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं किए थे क्या? ये थे सर. तो फिर तुम्हें क्यों नहीं पता? वेरिएबल्स. ठीक है. अच्छा, अब वेरिएबल्स में हमें वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वॉट एवर द वैल्यूज आर देयर, हमें ये भी डिफाइन करनी होती है. अब कैसे करनी है समझ लो. सबसे पहले टाइप, व्हाट इज अ वेरिएबल नेम? मंथ. अब इस मंथ के अंदर आपको कितनी वैल्यूज नजर आ रही है? काउंट करो. 12 वैल्यूज हैं. कौन कौन सी हैं जल्दी बताओ. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. So these all values are the month values. अच्छा, मुझे ये बताओ क्या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू पर डिपेंड कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है. यानी हर मंथ एक इंडिविजुअल होता है, हर मंथ के अपने डेज होते हैं. सो इन दिस वे आपके पास ये जो मंथ का वेरिएबल है और इसके अंदर जो वैल्यूज स्टोर हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, व्हाटएवर,
they are not going to depend on each other. This type of data type is called enumerated data type or non-composite data type, जिसमें एक डाटा टाइप दूसरे वाले पर डिपेंड ना करे. मैं इसको ऊपर ही ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ, इफ इट इज पॉसिबल. नहीं होगा. अच्छा, मजीद देखते हैं. अब हमारे पास ये वेरिएबल आ गया है मंथ का, एंड इन दिस वेरिएबल वी हैव असाइंड the further variables in it, like January, February, March. These are all the values. Acha. The variable this month and the next month of type T month could be defined. अब समझिएगा. I am going to declare a variable this month, and I'm going to declare another variable next month. अब मैंने अगर दिस मंथ में जनवरी लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना, काउंट यूज होगा यहाँ. दिस मंथ में मैंने क्या असाइन कर दिया? जनवरी. ये देखिएगा, आई एम राइटिंग दिस मंथ. दिस इज अ वेरिएबल, दिस मंथ. ये एक वेरिएबल है और इसके अंदर वैल्यू बताइए असाइन क्या हुई हुई है? जनवरी. अच्छा, अब अगर मैं लिखता हूं दिस मंथ +1, सो मुझे बताएं कंप्यूटर कौन सी वैल्यू को फैच करेगा? जनवरी के बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आ रही है? February. तो कंप्यूटर इज असाइनिंग फेब्रुअरी. सो इन्यूमरेटेड डाटा टाइप्स हमारे पास, या नॉन कंपोजिट डाटा टाइप्स, इस तरह से काम कर रहे होते हैं. इंडिविजुअली तौर पर वो हर डाटा को अलग अलग पढ़ रहे होते हैं. सो एवरी डाटा इज टोटली इंडिपेंडेंट. यहां तक क्लियर है या नहीं? अच्छा, और Is ये सारे मंथ किस में स्टोर हुए हैं? टी मंथ. टी मंथ इज अ वेरिएबल. टी मींस टाइप ऑफ मंथ्स. सो वी हैव 12 टाइप ऑफ मंथ्स, राइट? ठीक है जी. yes. चलो, take out your notebook. First you need to write down about the data type examples what I teach you, और फिर जल्दी से नॉन कंपोजिट को शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, इन्यूमरेटेड को शॉर्ट फॉर्म में लिख के फिर मुझे बताओ. आई विल ड्रैग यू ऑन दिस पेज. ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू डू दिस. बल्कि एक काम करो, डाटा टाइप छोड़ो, बस वो एक्सप्लेन कर दिया ना, तुम्हें समझ में आ गया है. अगर नहीं आया तो बताओ. यू वांटेड टू कॉपी इट डाउन और नॉट? No, sir, I understood. फाइन है. तो एक पेज पे देखो, ये पूरा मैंने कर दिया तुम्हारा. So you have only 4 minutes, 4 to 5 minutes, as well as you have to write it down everything with a proper pointer, and you need to send me the picture once you're done. The work should be proper, not a rough. Recording. And the next type is pointer data type. So in the first topic, we have covered non-composite, and then we are going to start with the pointer data type. So we need to write here. Okay, so what is pointer data type? Let's read. A pointer data type is used to reference a memory location. So simple, it is the opposite of enumerated. In enumerated, there is no reference. But in pointer data type, there is a reference of the memory location. So this data type needs to have information about the type of data that will be stored in the memory location. So whatever we are going to store, the data in a variable, that data is easily trackable in the memory location. So it means it is using a reference. It is an example like that, okay, you are living on a particular address. So if I'm going to send you a mail, a letter, that will be posted on your address and you will receive it. It means you have given me your reference, right? So your location is your reference right now. Just like that, the computers have a data, and that data is stored somewhere in the memory. So pointer data type is going to point that thing. Clear हुआ नहीं हुआ?
Yes, sir. In pseudocode, the type, we always write type. Definition has the following structure in which this thing, raised to the power, shows that the type being declared is a pointer. यानी जहां पर भी आप ये raised to the power का साइन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये कौन सा टाइप है, pointer type. And a type name is a type of a data to be found in the memory location. और उसके साथ जो type name लिखा होगा वो आपको memory location बताएगा. For example, real है या integer data type. So देखते हैं कैसे काम करता है. First you need to write down the type with the pointer, and it is always equal to this thing raised to the power with the type name. तो देखते हैं कैसे काम कर रहा है. I just write type t month pointer. So that month pointer is represented as a variable in this way. So जैसे ही मैंने ये raised to the power का साइन देखा, I come to know that it must have a reference. यानी pointer data type है, यानी इसका कोई ना कोई reference होगा. अब आपने जैसे ही month pointer लिया, month pointer में क्या स्टोर है, months के नेम स्टोर है. क्या स्टोर है, months के नेम. Months के name. So t month is a data type in the memory location. So ये जो t month है ये एक data type है किसका, name of the month. और पॉइंटर इसी वेरिएबल की मदद से, इसी डाटा टाइप की मदद से सारे के सारे मंथ के नेम जो है वो लाइन अप कर देगा. यानी इस बार आपको रेफरेंस नहीं देना पड़ा, यानी कि आपको इस दफा जनवरी फरवरी डिक्लेयर नहीं करना पड़ा. व्हाई? बिकॉज यू जस्ट डिक्लेयर द एग्जैक्टली वेरिएबल नेम, मंथ पॉइंटर राइट हियर विद दिस रेज्ड टू द पावर साइन. इसका मतलब क्या है कि आप अपने डाटा को डिफाइन कर रहे हैं इन दिस वे दैट इफ यू आर यूजिंग अ डाटा टाइप ऑफ मंथ, टी मंथ, सो in T month you have January, February, March. There is no need to write down the names of the month, just like we did up there. Is that okay or not okay? Yes, sir. अच्छा भाई. So इसको अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, month pointer with the raised to the power this month. तो दिस मंथ में ऑटोमेटिकली किसको ले लेगा, जो भी मंथ करंट आप इनपुट करोगे, और फिर वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट 1 by 1 मंथ को एग्जीक्यूट करता रहेगा. ठीक है जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन? No, sir. जल्दी से पॉइंटर डाटा टाइप के बारे में राइट डाउन करो, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखना, एग्जाम्पल पूरी प्रॉपरली लिखनी है, रेज टू द पावर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये सब कुछ लिखना है जो मैंने एक्सप्लेन किया है. एंड यू हैव टू ऑफ कोर्स राइट दिस बॉक्स एज वेल. Start now, and you need to send me the work picture whatever you have done from the very first page. I want everything on my WhatsApp. Okay, we have done the topic of non-composite data types. In non-composite data types we have two types, enumerated and the pointer data type. Is that okay? Yes, sir. Tell me again what we have learned till now, and you haven't sent me the picture. Where's the picture of your work? Oh, I have to send it together. Okay. Yeah, right now. Yes, sir. Send it. Acha, you have to also tell me what we have learned. Quick, give me a quick review. Sir, we have learned the non-composite data types, the enumerated data types, and the pointer data type. What is the difference between pointer and enumerated? Sir, in the enumerated data types, it contains no references to other data types. Perfectly fine. And in pointer? And in the pointer, there is a reference to the memory location. Memory location. So you declare the variable assigns the type of the data, and then it is going to automatically fetch the data, right? Now we are going to start a new data type called composite data type. So what's it in there? Let's see. Data type that refers to any other data type in its type definition is a composite data type. So the data type for record was introduced as a composite data type because it refers to the other data type. लेकिन ये composite थोड़ा सा डिटेल में किस तरह सब समझना. You are declaring a word type
T, and the variable is book record. Now in book record, what are the main things in a book? Of course, the title, the name of the author, the publisher, number of pages, fiction. So it means that in composite data type, you are going to give further other data types, whatever it belongs in a particular one. So book record is a particular variable here, a data type. And in a book record, there are many things like title, author, publisher, number of pages, fiction. So these other data types must be used with the main one. This type of data type is called composite data type. So you need to declare them. Look, you need to declare them. Declare title. So title, we must write in a string, like Harry Potter, Macbeth. They are in string. What is the name of the author? Like J.K. Rowling's. It's in a string. Publisher, Border Education. A string. Number of pages. I don't think so it's a string. But if you're writing 1, 2, 3 in many books, you write the numbers in string form like this. 1, 2, 3. So that's acceptable. And fiction. Yes, it is. So this type is called composite data type, in which one data type is going to be defined in detail with other categories of data type. Like a book have a title, author, publisher, these things. So they are also defined and declared in composite data type. Is that okay? Yes, sir. Okay. Other composite data types include sets and classes. Of course, you are going to classify anything. You are going to make a set of any data type. So you can also use sets and classes in it. So what are sets? Let's see in the details. A set is a given list of unordered elements that can set theory operations, such as intersection and union. A set data type includes the type of a data in a set. Remember this word set. Sets. I think I have learned this chapter in mathematics in my grade 7, in my grade 8, of course in 9. What are sets? Set means that you are going to assign a variable, and in that variable you are going to set a number or a group, like you're fixing 1, 2, 3. So these are the 3 set of numbers. There is a union or intersection. Have you learned this thing in secondary? Yes, sir, I have. Right? देखो एक बात याद रखो, A2 जो स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हो ना, जस्ट अ सेकंड,